There are entrepreneurs, and then there are individuals who redefine what it truly means to build a legacy. Today, we are honored to host a man who did not just create success in business, but chose to give it a deeper purpose, a purpose rooted in nature, sustainability, and the future of our planet. From the bustling textile city of Surat emerges a visionary who turned threads of fabric into threads of change. He is widely known as the Green Man of India, a title not given but earned through relentless dedication to restoring the environment, planting hope, and inspiring thousands to take responsibility of the earth we live on. An entrepreneur by profession, a change maker by passion, and a true environmental warrior by action. His journey is not just about building enterprises, but about building a greener tomorrow. Today on the Gilded Mic, we deep dive into the life, vision, struggles, and the powerful mission of a man who proves that success is not just measured in profits, but in the impact we leave behind. Please join me in welcoming Mr. Viral Desai, the Green Man of India. Some people talk about change and some people become the change. Today, I have with me with someone who not only realized and recognized a concern, but also acted upon it. He's often called the Green Man of India. I'm very honored and truly from the bottom of my heart, I'd like to welcome Mr. Viral Desai. Thank you very much, sir, for A being a pleasure. part of this journey. Humbled by introduction. Thank you. This introduction, actually, जो आपने काम किया है, is very small in terms of that. But I'd like to congratulate you कि आपने इतना कुछ किया है. This journey of yours is so inspirational. Before getting into the actual part of it, कि हर कोई हाँ हम करेंगे, हाँ हम कर सकते हैं, लेकिन आपने उसको एक्शन में बदला. तो आइए शुरू से शुरू करते हैं. Let's talk about your childhood. How was The it? first thing which I would like to share is that the journey has evolved. Okay. यानी सारी चीजें इवॉल्व हुई है. हाँ. So I feel that there is a divine this thing. There is a connection. There is a frequency. There is a manifestation, and some things are written for you, and they unfold. So when I am interacting and when I will be talking about the journey, it is something which you will understand how it is unfolded and how I have witnessed and how I have lived it 100%. I would say, yeah. A person who's living it 100%, उनका चाइल्डहुड कैसा रहा होगा, वो क्या सोच थी, बचपन से आपने क्या देखा कि आप इस एज में यू आर थिंकिंग ऑफ दीज थिंग्स. सो हाउ वाज योर चाइल्डहुड, अबाउट योर पेरेंट्स, योर मेंटर्स? Well, I would say it was fantastic, and I miss my childhood so much. I would love to have the same set of parents and provide it in the other life also, because it's been the journey has been so beautiful, and they say that usually the boys are very close with the moms, but I also was very very close with my dad, and dad के साथ जो relationship थी वो बहुत ही beautiful थी, and it has evolved over the years. Like it evolved. He's no more. 2016 में I lost him, but I would say that all the things, all the stories, and all the things which he suggested or he we spoke about, they played a very big role in my life. And in the childhood, it has always been like that, that I wanted to be excel in a particular thing whatever I'm doing, and that is what his idea was. So if I'm in sports, so then I would be, that I did my schooling from St. Xavier's, Surat, Okay. and at that time there used to be the ritual in which the assemblies were there. In the assemblies, anybody who will get an certificate or a recognition or say award or whatever, he used to get felicitated on in that assembly by the principal. And I was very fortunate that every other day there is some kind of a college like the exams which I have passed, like Jaipur. There were some engaging exams for English and Hindi and drawing, and so
So this was something in the childhood. It used to be some. I wanted to be there, like and do like I was a very active person in sports. I So, used to. excelling is in your blood. That means कि बचपन I से you've been strive. excelling and strived in every field that you went. You can say I was striving to excel, and the in that journey that was something which was there. So as a sports person, I used to represent states for football, Oh. table tennis. Basketball was again the main league, so university nationals. So I went like ahead in basketball. So basketball was a major sport that Major sport I that you pursued. played. Yes, and it went on through the college and like, but there were other sports also which were very equal and which were very much together. नो That- वंडर आपका जो माइंड फ्रेम है, जब हम इससे पहले बात भी कर रहे थे, आई कुड सी दैट हाउ स्ट्रॉन्ग अ विल you have within you to to achieve everything. So do you think that came somewhere down the line from sports, that feeling कि नहीं जीतना तो है ही है? I would say achieve everything is fine, but losing a lot of things, because these days, if we are talking about the generation that is there, so every success it comes after a point of failures, and there are a lot of series of failures, and then the success happens. So it's the resistance that makes you the person what you are, and how you take that, like because there are so many games you lose, and then there is the final game that you remember that you get a trophy for. So those are the times that teach you a lot, and those are the times how you recalibrate, reevaluate, and you just have a frame. I think this is exceptional what you said. I think this is going to be the highlight. So for you, failures are not failures; they are just resistance, They are just and resistance. you can very easily move out of it and keep going ahead. Absolutely. That's what you think. That's Because I believe again that there is this connection, there is this frequency. God has planned everything, so it is evolving. But at the same time, a person has to give his or her 100%. Then only things will be there. Like otherwise, you will never reach, or you will never come to know what is there in the store. Because if you analyze a permanent failure, it may be a stepping stone to success, but you have to just keep on continuing, because after that there is probably the best road or the best vision, the best thing to come. Oh wow! I mean, what a great thought. अच्छा, ये बताइए कि okay, so what about one childhood habit that has come, that is still going on? The one childhood habit that is still going on, I guess how humility is something which my dad always used to say, because he those were the stories that stay with me, that we had a 21 room bungalow, and we were the who's who, and there was this we were known as Desais because of Desai Giri. We had land in 52 villages across, and majority of the land belonged to us. And then there was a phase in which everything went off. Khede uski zameen aaya. Like everything was, dad was working with a corporate company named Nirlon, and then see, like all those stories were there which stayed. So I've always felt that the positions, the power, money, everything, that is something which is it's an alignment and a frequency, and everything is destiny, everything is destined. And at that a person has to be very humble, because everything is God given. Like whatever we have and whatever we are giving also is his. It is not us, Of because course. if in the morning you just wake up and you want to go to work and you are not feeling good, and you can't do it. So that is where the power of his The presence divine- is the there, divine the divine presence. presence is there. So Like you said, when we were talking about your parents, you said about your father. You're very attached to him. It's been around 10 years that he is not here. Does his physical presence, his कि वहाँ पर उनका होना ही, does it bother you? yeah, definitely. It is something which stays as a the physical moments are the moments we want to listen again, like कि viral जो वो बुलाते थे, you want a hug, you want a kiss. So yes, definitely I miss him physically, but
he's there. He's always there with me. So whatever I'm doing, he's present. He's present here also. So I think there is this wonderful thing which I feel that he should be a strength, not a weakness. When he was alive, he was my weakness and my strength, both. But because weakness, as in, like, I was always very much connected, and I would be, talking to him about all what I'm doing and what I will be doing, and all the strategies, and he would hear them very patiently, and he would be guiding me. But now that he is physically not there, so he can't be my weakness. He can only be my strength. So now he is my strength. So as a strength, he's there, motivating, inspiring, and the resilience you see in me. I think it's because of my dad's inspiration. So he's like the guiding light for you. I mean, from the divine, it is coming through your dad to you that you're Yeah, being you like can that. say that. Yes. So that is such a wonderful thing. Yeah. Everybody talks about habits of other things, but आपने जो बोला that not everybody would say that. And जिस तरीके के आपकी सोच है, the way you're thinking, uh, what shaped your thoughts when you started out as a child, when you went on to the college, and you would have seen a number of things happening around you which you wanted to change. But So what again, changed? yeah, going back again to my schooling and to my this thing. So he always had this one thing, that if you are in the league, then only you are noticed, or otherwise don't live like a common this thing, because I despise being common. Like I always wanted to do some we give my 100%. So in my school, as I mentioned, that all the small exams or sports or anything, I was very active, and I used to, with God's grace, again, a lot of recognitions and everything. And then it was that suddenly I realized, yeah, okay, like I look like this because you are so tan, and you have a lot of your skin is tattered and everything, because you are throughout the time you are on the field. And around in my college, the first year of college, I really felt that, okay, this is all fine, but then sports is not going to carry on, like it's not going to become my professional this thing, because there are very few like basketball players who were there, Of course. who were professionals in India. So I just thought that, okay, I want to do modeling, and I started modeling, and I used to go to Bombay for shows and Oh, everything. lovely. This was which year though? That was around From 90, modeling to becoming the Green Man of India. What a 96, journey. 97. But what happened was that this journey was also like it was a sudden transition, because you realize that your skin is messed up. You are messed up with your hair and everything, and then you want a transformation. And that transformation is something you are so charged up for the transformation. If I show you the pictures, you will not believe that I used to look like that. My God. And that transformation happened, as in I'm looking at the screen, and I'm seeing all these wonderful models, and they were the best of the models, because at that time they were supermodels like Milind Suman, Arjun Rampal, Oh. yeah, Bikram Saluja. So they were the ones who you used to look for, and they had the same aura and the visibility like the Bollywood Yeah. this thing. So I thought that why not modeling, because their skin is so good, and I will change and transform. And then I went behind that, and all natural application and everything. And my mom, my entire family, my relatives, everybody is shocked that what is he doing every morning? He's applying something, and he's just So that's how the transformation came. I did modeling and everything, and then in modeling I was doing good. I used to go to Bombay for shows and everything. But one fine day, again, it was this discussion with me and my dad, that he told me that all this is fine, but can we have a degree to fall back? Because if anything doesn't work out, a degree will always help. Oh, so your father backed education always. Yeah, so I did my BCom at that time, and I was very much engaged in all this modeling assignments and everything. And as a person from Surat, South Gujarat, going to Bombay was something which was a like dream come true kind of a this thing.
But then when he suggested, and MBA was something we were very, very known at that time, and I said, yeah, that's something which I would like to. I enrolled, and once I started studying, and because MBA is mostly about case studies and True, group true. discussions, and you are studying about the case studies of PepsiCo and Coca-Cola and Ford, and you're talking about companies like All the Tata and biggest companies yeah. in the world. So I was fascinated. I felt that an entrepreneur is an empowered person. Like he has the power to change, and I thought that this was my calling. So modeling was just left off in the between, and I again did my internship or my summer training with Coca Cola, and Okay. at that time again we had this show of Aryans, and so again it went to Filmistan and saw the promo shoots and all that. But then at that point I was not that tempted, because somewhere this entire jolt had happened that I want to be an entrepreneur, and entrepreneurship is calling, and and it was something which opened up or unfolded from the very beginning part, saying that when I saw my dad working, when he was in the corporate, he was doing his job. At that point, also in the childhood, I wanted to become a business person. I would not want to do a job, and there was this other thing which kids, you ask them questions and they would say, oh, I want to become a lawyer, or I want to become a doctor, or I would want to become an engineer. I said I want to become the most influential person in the world. And I used to read books also, mind reading, body language, and all those kind of very, very unique book reading and everything. So that unfolded, and I thought that okay, this was the reason that entrepreneurship is calling. And if I become an entrepreneur, there will be a lot of things which I will be able to do, and that is the reason. That was my pure goal. So from being in front of the camera to walking on the ramp to the sudden drift towards entrepreneurship, your mindset changed. And was the family okay? I would that- say not the mindset change, it unfolded. Oh, so it unfolded. Yeah, the So it game unfolded. Yeah. That's what you're saying. Okay, so once your mind unfolded towards entrepreneurship, the transition, your parents and everyone were okay, or they were? Oh, they were absolutely happy. Oh, they were my more my than parents happy. were always backing me up. They were always like, whatever you want to do, whatever you feel like, just notice your calling and give your best. That is what. They gave you entire freedom key. Yeah, give your best to anything, whatever you're doing. But you should be the best, because you should be known. Because only this is what he always used to say, that mediocres, like वो जैसे वो लाइन में खड़े रहते हैं ना, वो लोग कभी दिखते नहीं है. घेर वो जाल में 1%, नहीं हाँ, जाना. 1% जो है, जो तेंदुलकर है, सचिन तेंदुलकर है, कि ये जो जाने जाएंगे, रतन टाटा है. So they will be the visionaries. They will be the ones because you will be the entire centuries. You will be naming them, and you will be remembering one person, this thing. So why? Because they have done such things, or they have gone to that excellence level. So that's So while we were doing our research about you, your journey is not of a very stereotypical image of an entrepreneur. You became an entrepreneur, but entrepreneurs are all about money, all about fancy cars, a lot of other things, a lot of vacations, and going here, there. so. I also have the same set of things, and I also enjoy my vacations. I would say that I also have my own. The vacations part is there. It's not that I don't do it. Yeah. Kinds. But then your work as an entrepreneur became a little more responsible entrepreneur, and you were not only catering to the businessman category, you were also doing social work while that. Why did that change come? Why you wanted to become that? So when I'm saying that I'm also बहुत ही अनकन्वेंशनल चॉइस है ये. हाँ, यानी मैं वैसे ही मजाक या तौर में बोल रहा हूँ कि मैं भी ऐसे घूम रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, बट मैं वापस वहीं आ रहा हूँ कि लाइक एक एंटरप्रेन्योर है, उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. कहीं ना कहीं इतने करोड़ों लोगों में से there is one person who has the choice, and that person
लाइक अगेन वो अगर बिलीफ सिस्टम ऐसी है कि मैं कर रहा हूँ या मैं सक्सेस हो रहा हूँ या मुझे कुछ सारी चीज मिली मेरे दिमाग से हो रहा है, सो कहीं ना कहीं देन आई कांट हेल्प इट, बट मेरा मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो तो इट्स गॉड्स ग्रेस एंड ब्लेसिंग्स, लाइक वो दे रहे हैं सब कुछ ये है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, द एम्पावरमेंट जो है उससे ज़्यादा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द सोसाइटी, टूवर्ड्स द पीपल हु आर वर्किंग, टूवर्ड्स द एंटायर कंट्री एंड टूवर्ड्स द ग्लोब। एन एंटरप्रेन्योर इज अ प्रिविलेज पर्सन, बिकॉज बहुत सारे लोगों में से एक जन को इतना ये मिलता है, लाइक कि वो लेवरेज, बन सके। हाँ लेवरेज मिलता है, उसके पेरेंट्स, उसका स्ट्रक्चर, उसकी एनवायरनमेंट, उसकी परवरिश, उसकी बहुत सारी चीजें होती है कि वो सारी अलाइन होती है, तब वो एंटरप्रेन्योर बना है। तो उसकी ये लाइक व्हेन ही इज रिच, ही इज द मोस्ट ब्लेस्ड पर्सन, so he has the potential to change a lot of things, and if he does give in, like, so I think it will manifold, it will come back, because as we believe, like, there is a Simon Sinek quote, like, कि we are finite people, like, we are going to go, but ये like सारी चीजें जो चलती रही वो इनफाइनाइट है। So in that finite time, what is the one thing which you can do, so that thing will give you that satisfaction, which will give your soul the satisfaction. That is one thing which an entrepreneur can pursue. There are, when you said there is 1% of the entire population who's into entrepreneurship, but not everyone thinks like you. Entrepreneurship basically, they think like me, but वो पिछले सालों में ऐसा सोचते हैं यानी वो 70-75 के बाद वो ऐसा सोचते हैं कि भाई अभी कैसे ये करना। Again, it's like I'm just kidding, but I understand. But what my question is that entrepreneurship is about building a business. It is building a certain kind of a work environment for yourself, and where you earn, right? That's what entrepreneurship so I'll give you an example. आपका क्या चेंज? हाँ, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मैं टेक्सटाइल से बिलोंग करता हूँ। एंटरप्रेन्योरशिप जो स्टार्ट हुई, मेरी जर्नी 2003 से स्टार्ट हुई। टेक्सटाइल जो है वो उद्योग जो सूरत इज नोन फॉर टेक्सटाइल्स एंड डायमंड्स। करेक्ट। सो टेक्सटाइल वाज ड्रिवन इन अ वेरी कंजर्वेटिव वे। सो कंजर्वेटिव वे में कैसा होता था कि जैसे एक ओनर है, वो ओनर जैसे फैक्ट्री में घूम रहे हैं, तो वो उनके पॉकेट में उनका हैंड है, वो कभी भी कुछ भी होके गुस्सा होके वो चाटा मार सकते हैं, कि ऐसा कुछ होता था। हाँ, यानी द पीपल हु यूज्ड टू वर्क, द वर्कर्स वर सो स्कैर्ड। अब वो उस टाइम के वो लेवल पे था। अब ये जमाना आता है कि ओके, आई अगेन, लाइक विद ऑल द एजुकेशन, विद Pepsi and whatever we have studied and everything, so you believe that why can't interaction happen? And there I started connecting with the workers. There were a lot of people who were skeptical about it before, okay, you don't talk to the workers because you don't engage on that level what you are doing. You are talking to them in a very common way, very boss, very nice. They are just workers. Yeah, so why maintain that distance? हाँ, maintain the distance. आपको ये लेवल पे ही बात करनी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, इतना इमोशनली आपको जज नहीं करना चाहिए। सो मैं उस टाइम पे भी मैं यही सोचता था कि क्यों नहीं कर सकते, बट उसमें रिजल्ट क्या आया मैं ये बताता हूँ एज अ कमर्शियल, बिकॉज इफ व्हेन एज अ एंटरप्रेन्योर इफ आई हैव टू एक्सप्लेन कि मुझे उसका क्या रिजल्ट मिला है, मैं ऐसा कर सकता था कि मैं अभी भी ये कर सकता हूँ कि मैं हमारी फैक्ट्री में कोई भी मशीन के आगे मैं खड़ा रहूँगा और मैं उसको बोलूँगा कि ये मशीन की इतनी कैपेसिटी है, इतना प्रोडक्शन यील्ड हो सकता है, कैन वी डू इट, कैन वी मैक्सिमाइज, कि इससे ऊपर कुछ हो सकता है, एंड वी डू सम वंडरफुल वर्क इंडिजीनियस, लाइक ब्रेनस्टॉर्मिंग इंडिजीनियस वे में कहीं से भी ये करता है। बिकॉज इंडिजीनियस मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज एज एन MSME there are a lot of restrictions of budgets and everything in textile, and we can't just tell okay, this German technology is very good, let us just get the German technology. What we do is, which is very very different, because when we are talking about energy conservation, when we are talking about, so we go to the scrap yard
there are various ship breaking units which are there in Alang and everywhere, and then we take few parts, we get them here, उसका गियर बनाएंगे, उसका ये करेंगे, और उससे yield चेंज हो जाएगी, प्रोडक्शन चेंज हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर मेरे साथ बात कर सकता है, वर्कर बात कर सकता है, कुछ भी, यानी कोई भी फ्लोर, यानी हम नॉर्मल फ्लोर पे से anybody can talk to me, anybody can, till the time I'm there. So that is the result which with work there have been miraculous results, but with this kind of behavior and with this kind of यू हैड एन ओपन डोर पॉलिसी कि मतलब कोई भी जब आप बैठे हैं, कोई भी बेसिक से बेसिक वर्कर भी आपके पास आके, इवन सिक्योरिटी गार्ड कैन कम एंड डिस्कस एनी प्रॉब्लम when I go in the plant. whenever मतलब wherever you are there, Absolutely. not at the other hours. Absolutely. Did this change, or the part where you thought कि यार ये लोग ऐसा कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, I will speak to everyone because I want to, and you said the results changed. हाँ. Did that affect your relation with the other people who were there, who were thinking कि यार ये I तो was सबसे जाके I बात was कर too रहा है? busy. I didn't have that kind of वो जो टाइम ही नहीं था, मैं पूरा टाइम फैक्ट्री पे ये था, और मुझे I was so involved with my people, and like this there is a social life which is there, which is a different kind of this thing. But then with business, when the setup was being done, it was a very hard task, because there was a new industry which we had set up, and that was a second hand which we had bought, and उसको हमको एक ये जर्नी में लेके जाना था, और मुझे वहाँ पे भी एक ये था कि मेरा जो इन-लॉज का ये था कि ज़ेनिथ द फैक्ट्री इज 40-45 years डाउन द लाइन. Okay. तो वो इतना बड़ा ये था, बिकॉज आई लाइक व्हेन आई गॉट मैरिड, तो उनका एक बहुत बड़ा ये था, इमेज था. और कहीं पे भी मैंने जो नया सेटअप किया था, कि जहाँ सचिन में एक इंडस्ट्री आई थी, उसका नाम जेनिटेक्स था, तो उस टाइम पे एवरीबॉडी वाज स्केप्टिकल कि यार ये क्या होगा, हम तो जाएंगे, हम जेनिटेक्स में काम करवाएंगे. तो मैं कहीं ना कहीं वो एक जर्नी में एक चैलेंज थी कि भाई कैसे करेंगे, यानी क्या होगा. और वो लोग ऐसे बोलते थे कि भाई दिस इज जस्ट स्मॉल दिस थिंग यूनिट, और ये हो रहा है. तो मैं पापा को जाके हमेशा बताता था कि डैडी ऐसा हो रहा है, कि क्या करें, कैसा होगा जेनिटेक्स. तो ही ऑलवेज यूज्ड टू से कि लाइक आप नाम बड़ा नहीं कर पाओगे, तो ध्यान रखना कि उससे कम नहीं हो. बट अब तो मेरे दिमाग में, मेरे जहन में इतना ही आता था कि मैं कैसे करूं, लाइक व्हाट आई शुड डू, कि जिससे मेरी इंडस्ट्री जो है वो एक्नॉलेजमेंट मिले, मेरी इंडस्ट्री, वो सपना था. And it was a very very strong will and that require. I really wanted that, because मुझे लगता था कि because वो मीडियोकर जो है, कि जो कीड़ों मकोड़ों जैसा मुझे नहीं ये करना, मुझे कुछ भी करके एक लेवल पे मैं कैसे जाऊंगा, क्या करूंगा. और मुझे यही लगा कि ये जो मेरे साथ में है, हम सब साथ में जा सकते हैं, बिकॉज वी लाइक वर्कर्स एवरी, सो दे कैन बी a part, a driving part, and it can be anyone. It can be a very like a person who cleans this thing, or a person who serves the coffee and tea, and anybody. A peon can also be engaging to that level, like वो पार्टिसिपेट कैसे कर रहा है और क्या लेवल पे हो रहा है. तो मतलब you made them as a part of your work family, because they were spending their second home, they were spending most of the time there. And we all had a single goal, like कि हम And कैसे, yes. हम क्या करेंगे, कि जिस हिसाब से ये with God's grace and blessings everything unfolded, and today we are the most awarded industry of India, and textiles में इतने awards जो है वो शायद ही किसी के पास है. तो I am again very No, blessed. I'll tell you something. People who are very humble, people who are very modest, they'll always give credit to the higher divine power. But I'd like to give them the credit, because that is what makes them different. What you have done, of course, it is the thought and the process that has come all the way throughout. Not everyone talks about this. Now, there is a certain very important part in your life which came the rehabilitation of a lot of employees that you did.
Yeah, the jobless diamond worker. The jobless diamond workers, because in 2008, after the recession, there was a huge hue and cry. There were a lot of people who were committing suicides, and that's where you stepped in again. Again, you were the only one who stepped in. The thought, why again? इस बार भी आपकी सोच अलग क्यों थी? ऐसा क्या हुआ जो आपने देखा and you felt it from within? I think 2003 में जब I started business, 2006 तक everything started normalizing because I was giving a lot of time, and in the initial phases I used to go home around 9:30 रात को and used to come like early morning and everything. So at that time we were formalizing everything. 2006 तक normal होना चालू हो गया था, and after 2006 I thought कि जो वापस वो कि as an entrepreneur, I'm sitting here, but what is my this thing? Can I give back? So then there were some associations, and there were some. There was this Sachin Industrial Cooperative Society. वहाँ पे इलेक्शन था, उन्होंने मेरा नाम ऐड किया. Very young guy के उन्होंने मुझे उसमें लिया. I got elected as a first youngest ये के जो वोटिंग के साथ हम लोग जीते and everything. तो 2008 तक मैं उनकी जो ये करते थे, सचिन इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी वाज अ सोसाइटी इन विच दे यूज्ड टू गिव लाइक सोसाइटी पूरे एरिया जो जीआईडीसी है उसको मॉनिटर करती थी, और बहुत सारे सोशल वर्क इनिशिएशन ऑफ डीजीवीसीएल के लाइजनिंग एंड एवरीथिंग वाज हैपनिंग एट दैट टाइम. व्हेन वी यूज्ड टू रीड द न्यूज़पेपर्स इन 2008 जो रिसेशन हुआ था, suddenly you are reading every single or the alternate day you are reading there is this family who's consumed poison and they have done mass suicide. पूरे फैमिली ने जान दे दी है क्योंकि उनके पास काम नहीं. सो आई एम वेरी मच अपसेट कि ऐसा कैसे हो सकता है कि काम नहीं है. हमारे टेक्सटाइल में तो अभी भी काम है. अगर एक बंदे को टेम्पररी भी काम मिल सकता है तो उसकी जान तो बच सकती है. सो आई गो टू द प्रेसिडेंट of the Sachin Industrial Cooperative Society and I tell him that we can do something for them, and he said okay, whatever you want to do, I'm giving you the project chairman and you become the leader and whatever you want to do. And I had this clear idea कि okay, एक फॉर्म बनाया, फॉर्म में ये लिखा था कि भाई किसी ने इंजीनियरिंग का थोड़ा बहुत भी लाइक वो यूटिलाइज किया है, कि कुछ इलेक्ट्रिकल काम किया है पहले, किसी ने कहीं टेक्सटाइल के इसमें काम किया है, किसी ने ये किया है, ऐसा करके एक फॉलो थ्रू एक फॉर्म में लिया. दैट वाज अ फीडबैक. And then we invited them and we showcased them. I showed him the entire factory, from the range of from the starting point to folding to the dispatch and to the delivery point of a textile industry, कि जिसमें सारी चीज आ जाती है और कहाँ पे कितनी सैलरी मिलती है. कितने लोग थे roughly? I think like 3,500, 4,000 people were there. 3,000 to 4,000 people. Yeah. And 1,500 of them, for 3-4 months they continued, because what happened was कि मैंने लोकल इंडस्ट्रीज में, टेक्सटाइल्स में सबको फ़ोन करके मैंने पूछा था कि भाई आपको काम चाहिए, लाइक कोई वर्कर चाहिए, मैन पावर शॉर्टेज है तो हम ये कर सकते हैं. तो मैंने क्या किया था, इट वॉज वेरी सिंपल. आई वेंट एंड आई एंगेज विथ माई टीम, जो मेरे कॉन्ट्रैक्टर्स थे, यूपी, बिहार, उड़ीसा, झारखंड इज यूजुअली द टेक्सटाइल, जो जितने भी लोग आते हैं वो. So it was a very big thing because the diamond workers were from northern Gujarat. तो वहाँ पे बोली सब अलग, पूरा अलग, और वहाँ से कैसे इन्वॉल्व करना, क्योंकि वो लोग इनसिक्योर नहीं फील करने चाहिए. बट वहाँ पे मैं जो आपको बता रहा हूँ कि वो डेस्टिनी जो मैं बोलता रह रहा हूँ ना कि अनफोल्ड, तो वहाँ पे ऐसा था कि बिकॉज आई वॉज सो इन्वॉल्व विद देम, आई जस्ट इंटरेक्टेड विद माई कॉन्ट्रैक्टर वन फाइन डे कि यार मैंने ऐसा काम लिया है, मुझे ऐसा लगता है कि ये कर पाएंगे हम, करेंगे, बात करते हैं. हालांकि उनको कन्विंस करना कि कैसे होगा, वो क्या आउटपुट आ रहा है वो हमको नहीं पता है. तो उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, आपके पास लेके आ रहे हैं, आप बात करिए. सो वो वर्कर्स को मैंने इतना ही बोला कि सूरत के दो लड़के हैं, एक टेक्सटाइल है, एक डायमंड है. आपका भाई जो है, अपना भाई जो है वो बीमार है, उसको अभी प्रॉब्लम है, उसको ये है, और हमको उसको ये मदद करनी है, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है और वो हार रहे हैं, उसको हम कुछ कर सकते हैं. अरे एकदम से ऐसा आवाज आया, नहीं हम ट्रेन करेंगे सर, हम ये करेंगे. तो वहां पे क्या हुआ कि एक लाइव
जो बोलते हैं ना कि फर्स्ट टाइम एक लाइव इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री रनिंग इंडस्ट्री में स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, कि वो मशीन पे उसको दिखाते जा रहा है कि ये मशीन पे ऐसा करना है, इसके इतने टेम्परेचर लेना है, इसको ये हिसाब से हैंडल करना है, यहाँ पे डिस्पैच होगा, यहाँ पे फोल्ड ऐसे होता है, फोल्ड करके उसको बैग ऐसे चढ़ाते हैं, या डिलीवरी कैसे होती है, वो पूरा उनको समझाया, जिस जिसको भी जो जो सेक्शन में काम करना है, तो वो स्किल हुआ। वो स्किल के बाद दे वर रिहेबिलिटेटेड कि दूसरी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में आई कॉल देम एंड आई टोल्ड देम दैट कैन यू एम्प्लॉय देम, so they said that yes, we can employ them, but the social aspect is something which you keep to yourself. I said okay, no problem. So unka there was an area Nana Varacha to Sachin, तो उसका बस का पास जो था अराउंड 1500 जैसा था, तो आई टोल्ड देम दैट after the month you just show the bus pass and you take the money from us. So this is how this entire rehabilitation of jobless diamond workers जो हुआ, and people got So you paid it rehabilitated. by yourself? You paid it from your pocket? Yeah. Why? क्यों? You have to, you know, at that time you had to be there for them. So अगर वो टाइम पे उनको इतनी मदद मिल जाती है तो उनकी लाइफ पूरी ये हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आई रिमेम्बर दैट, सी पर उनकी खुददारी देखिए। आई रिमेम्बर दिस वेरी यू नो दिस इंसिडेंट के जिसमें एक लाइक हम लोग ने क्या किया था कि जहाँ पे सचिन इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी में हमने बाहर हम बैठे थे, बिकॉज हम एसी में बैठेंगे और मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें करूंगा तो अच्छा नहीं होगा ना, बिकॉज मैं उनके फ्रीक्वेंसी पे नहीं जा पाऊंगा। तो आई एम सिटिंग आउटसाइड एंड आई एम, सो देन देयर इज दिस लेडी हु इज कमिंग एंड शी हैज टीयर्स इन हर आईज एंड शी इज सेइंग दैट भाई इनको काम मिल जाएगा मेरे हस्बैंड को। तो हाँ मिल जाएगा। नहीं हम 50 रुपये यानी वो ऊँची के लाइक वो लेके आए हैं, किसी के पास मांग के लेके आए हैं एंड और कुछ नहीं है, बस काम चाहिए ऐसे करके। सो आई सेड राइट नाउ, अभी ही उनके पास काम है, इनको फैक्ट्री में लेके जा रहे हैं और मैडम आप ये पैसे लीजिए। तो आई एम गिविंग हिम 100 रुपी नोट, हर 100 रुपी नोट एंड शी सेइंग नो 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 नो, खुददारी के पैसे चाहिए, आपने काम दिया है बहुत हो गया। ऐसे यानी वो ऐसे रेंडिशंस थे कि जो मेरी लाइफ में आई फेल्ट you know that divine, I could see that I can be meeting the divine. So then this gentleman who was working in my folding department, who is wearing a white and pure white and white, I'm very worried कि how will he work, because diamond में तो ऐसा होता है कि वहाँ वर्क होता है तो बहुत अच्छा एसी वगैरह में होता है। तो मैं उनको बोल रहा हूँ कि आप मेरी फैक्ट्री में काम करेंगे तो ये खराब हो जाए। बोला बेटा खराब हो जाने की सोच मत, मेरे को अभी काम मिला है वही बहुत है। एंड व्हेन ही वाज लीविंग, बिकॉज यू नो व्हेनेवर आई यूज्ड टू गो इन द फैक्ट्री फॉर अ राउंड, ही वुड बी यू नो कि हेलो कैसे ब्लेस ऐसे करके। सो जब जा रहे थे कि अभी डायमंड स्टार्ट हो गया है ना, हम जा रहे हैं, सो ही वाज टचिंग माय फीट एंड आई सेड डोंट डू दैट, प्लीज डोंट डू दैट, बिकॉज आप मेरे से बहुत बड़े हैं। तो आप इतना कीजिए कि बाहर कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान को आप ये करके जाइए। तो वो बोल के गए क्या तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हें कितना ब्लेसिंग मिलने वाला है, तुम्हें नहीं पता है कि क्या क्या होगा, बट लाइक सारी चीजें होने वाली है। सो दिस काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग जहाँ पे वो ये है, और मेरी लाइफ ऐसी ही गई है। यानी आई हैव रिसीव्ड you know some things which have been you know like entirely, अभी भी मैं देखूंगा तो मैं ऐसा बोलूंगा कि this is a blessing, pure blessing. So the life like that I'm living is a blessing, everything that is happening is a blessing. So that meant more to you, the blessing, Absolutely, yeah. the smile on the face, जो Yeah. खुदारी भी जब आपने देखी तो you also felt it. So this means Somewhere more. I could see कि अगर मैं होता, मेरा परिवार ऐसा होता, मेरे मम्मी पापा ऐसे होते तो कैसा होता। एंड दैट इमोशनल, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा ग्लिच है कि कभी भी एंटरप्रेन्योर जो है उसको इतने लेवल पे इमोशन रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, दैट इज अ डिबेटेबल थिंग, बट इट हैज वर्क फॉर मी, इट हैज यू नो आई हैव ग्रोन दिस वे। Yes, because you have compassion, you have faith, and इसमें ये जो हमने पढ़ा है कि इसमें जब आप ये पर्टिकुलर प्रोसेस से शुरू हुआ है, एक और भगवान ने देखा कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं इसमें, देन वी शुड टेस्ट हिम। सो अनदर टेस्ट
in terms of which is India's currently most dangerous illness and disease started coming in front of you in terms Cancer. of cancer. Tell us about the journey, that what you thought and how it started. So rehabilitation of jobless diamond worker happened. At that time, there was this gentleman who whom I was convincing so much कि आप कर लीजिए काम, आपको मिल जाएगा. But eventually I came to know that that person was just there because वो समाज जो सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज जो है उनके बहुत मेन पर्सन थे और वो देखना चाहते थे कि एक बंदा जो कर रहा है वो जेन्युइनली करना चाहता है, वो ओह। कैसे रिहेबिलिटेशन कर अच्छा, रहा है. verification हो रहा था आपका. यानी वो he was also a part of the entire thing, and then he was very much impressed, and he realized. And then I got an invitation from Bharat Cancer Hospital. There were a lot of NGOs who were invited, but I didn't know anything about it. There was this gentleman again who called me up and he said that you have to be here. I said, for what reason? He said, just be here. और मैं वहाँ पे गया हूँ तो वहाँ पे वो डिस्कशन हो रहा है. एवरीबडी इज इनवाइटेड बाय रवि राज करके, दिस न्यू जॉइंड medical director of Bharat Cancer Hospital, and he came from Tata, and he wanted to meet all the NGOs and all the people who were doing good things in the city. Some were saying blood camps, and others were like जो rehabilitation of people who are drug addicts and alcohol addicts and everything. So there were a lot of people who were all NGOs, and then so he had invited, and everybody is introducing that I'm this. I've done work since 10 years, 15 years, and I don't know that why am I there, and I get up and I don't say anything because like what do I say? And then this gentleman is getting up and he's saying that he's Viral Desai, and what he's done for the Saurashtra, like for the diamond workers and the Seva Samaj and all, like he's been phenomenal. This is how he introduces me, and it was so embarrassing because it was such a big introduction, and I'm like, oh, okay, yes, I have done that. And then I said, but then I there was somebody who was noticing it. That was Ravi Raj, the medical director who had recently joined, and he was also a very young guy. So he said that okay, he comes to me and he says ke bhai kaisa hai, kya chal raha hai na. Then we are discussing, and yes, because I have seen diamond workers, I have seen the textile workers. There was something because these workers, they stay alone. So as I mentioned, UP, Bihar, Orissa, Jharkhand, so they come to the city. They stay in one single room. They share the room. There are 3-4 people who are staying in one single room, and then for their you can say relaxation, entertainment, they start chewing tobacco. In a very young age, they start doing that. और यहाँ से इसके वजह से the prevalence of oral cancer in South Gujarat is the highest. It is very this thing. So this gentleman was the one. Ravi Raj was trying that he will invite all the NGOs and he will do a campaign and everything. So that's how we got introduced, and then it was the camps that we kept on doing, and how cancer research. You created a awareness team and you had a lot of yes. So that was the foundation. Through the foundation Hearts at Work, we did very unique things, wherein again it was a very Western concept of creation of all the camps which were done, because we would highlight the places, we would decorate the places, even in the villages and wherever in the vicinity. It was a pink ribbon campaign, and illumination of the building and Did everything. people know about pink ribbon that time? पता था उनको? I guess not, but again, it was a very emotional this thing, because after doing one big camp, we screened around 4,000 people, 3,500 to 4,000 people in Sachin, and that camp it was L&T and various other big industries also conducted the same thing, but we in Sachin they gave us the responsibility, and we were just having tea together, and it was his OPD day, and Ravi Raj, and he's getting a file inside, and then in the file it was mentioned that this person, the person who has come, the patient, so that outbound patient had a 4th-stage cancer, and he just mentioned to me, and I'm very scared, and I'm sitting in the 4th chair. Oh, so the doctor. Oh, so Yeah. live. ये आपको बताया था भी उन्होंने. हाँ,
तो वहां पे जो फाइल आई है और वहां पे बाहर बैठे हैं, तो उन्होंने उन्होंने बोला कि मैं उनको बुलाता हूँ। तो जब वो अंदर आ रहे हैं तो मैं उनकी बॉडी लैंग्वेज देख रहा हूँ, वो सर पे तिलक बिलक लगाया हुआ है, इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक, कुछ नहीं होने वाला है, हस्बैंड वाइफ एंड सन हैड कम। तो मैं उनको ध्यान से देख रहा हूँ, सारी चीजें देख रहा हूँ, एंड देन आई एम लुकिंग एट द डॉक्टर, एंड द डॉक्टर इवेंचुअली टेल्स हिम दैट ये है। सो जो जो मेन पर्सन है वो एकदम फसक जाता है, लाइक ही ड्रूप्स डाउन इन द चेयर एंड ही इज लाइक okay, and he has little tears but he's hiding the tears, and he's so the wife is holding, trying to hold the hand and say, मैं हूं ना, हम लोग हैं ना साथ, लड़ेंगे ना, ऐसा क्यों कर रहे हैं? So the son is also in tears, and he's getting calls and he says ke, I'm busy right now, just I'll call you back. So that this entire thing, I'm looking at them and I am so shocked. I don't know anything later on whatever happened, like he was explaining about the radiation and the chemo and the operation and everything. I don't know what was going on, but then the last statement that I heard was ke abhi kitna samay hai hamare paas. So this is where this connection happened, that I started crying when once they left, and I said, if this is what cancer does, we are going to fight cancer, doc. Let's do something which we very strongly, कैसे उसको फाइट करें, क्या करें? तो बोला कि वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसे होता है कि और वहाँ पे वापस एक बचपन की जो ये था मेमोरी, वो फ्लैश हो गई, क्योंकि मेरे मामा जी जो थे बड़े ही, उनको सबसे पहला मैंने कान दिया था, बिकॉज वो क्रीमेटोरियम में मैं फर्स्ट टाइम गया था एट द एज ऑफ 16, एंड वहाँ पे पढ़ाई में बुक में आता था कि कीमो इज क्योर फॉर कैंसर, एंड आई यूज्ड टू टेल हिम दैट ही हैड 2 daughters, ही वाज वेरी स्कैर्ड एंड ही वाज वेरी वरीड, एंड ही ऑलवेज यूज्ड टू आस्क मी। सो मैं बोलता था, मामा जी इसमें है बुक में कि कीमो से अच्छा हो ही जाएगा, आपको अच्छा होने वाला है, एंड सडनली आई वन फाइन डे आई केम टू नो दैट ही इज नो मोर। सो दैट वाज द डेथ which at that point why I started crying was the reason, because I connected the entire thing, and then I said no, let's fight, because ये तो fight होनी ही चाहिए। So then the doctor told me कि okay, western countries में बहुत बड़े पिंक रिबन कैंपेन्स होते हैं कि जहाँ इल्यूमिनेशन होता है, पूरे लाइट्स लगती है, जैसे वो जो बुर्ज अल अरब है यूएई में, वो पूरा पिंक करते हैं, कि व्हाइट हाउस है उसको पिंक करते हैं, तो वैसे हम कर सकते हैं। सो आई सेड लेट्स डू द बिगेस्ट कैंप, एंड 100 such building in Surat we did. So at that time it was a very very huge campaign. It was, probably it was the biggest in the world, कि city में 100 buildings were pink. But obviously nobody noticed it, because pink ribbon किसी को पता ही नहीं था कि what is pink ribbon, because वो तो मुझे और सर के हम दोनों को पता था, पर हमने उसके साथ साथ में बहुत सारे कैंप्स किए कॉलेज, फीमेल कॉलेज में ये सारा मेमोग्राफी स्क्रीनिंग किया, there were other female groups, वो बहुत सारी चीजें You also spoke about breast cancers, you spoke about various other cancers. There was one particular part where you went to a tribal place also. Yeah. So that was कैसे करके बात किया आपने वहाँ? तो मतलब वहाँ डांग is again the poorest tribal belt of India, and it is the 18th flagged tribal belt of the world. So it is so poor. Okay. And वहाँ पे ऐसा है कि it is on a hilly area. It is on the border of Gujarat and Maharashtra, and the females belong to a very poor, यानी बहुत ज़्यादा below poverty ये है, और वहाँ पे बहुत यानी 40,000 फीमेल्स भी स्क्रीन्ड ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। वहाँ पे पूरा टोटल पॉपुलेशन डॉटर्स यानी छोटी लड़कियों के साथ 1 लाख का है, तो मेजॉरिटी पूरा पॉपुलेशन को हमने स्क्रीन किया। दैट वाज अ वेरी टफ थिंग, बिकॉज हार्वर्ड वाज देयर, टाटा कैंसर वाज देयर, लाइक अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स फ्रॉम गुजरात एंड अराउंड वेयर देयर। सो दैट वाज वन कैंप व्हिच was something very tough, but at the same time it was an eye opener, and again an evolving journey. Eye opener. How was it an eye opener? Eye opener as in when you see, when I'm mentioning that they are not having the best of the foods, like the organic, they are not accessible to organic foods, alkaline water and all that thing, because they are like they belong to the tribal belt, वो शायद
2 बार का खाना नसीब नहीं होगा, बट उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति इतनी ज्यादा थी, प्रिवेलेंस वहां पे इतना कम था उस टाइम पे कि डॉक्टर्स भी हैरान हो गए कि ये कैसे हो सकता है, बिकॉज द विसिनिटी इज purely green. It is a forest. It is an enchanting forest. It is an untouched forest. So Dang is the most beautiful area. और वहाँ पे ये एक आई ओपनर था फॉर द डॉक्टर्स इंक्लूडिंग मी, बिकॉज आई थॉट कि अगर कैंसर हो ही नहीं सकता, यानी इतनी ज़्यादा रोग प्रतिकारक शक्ति आ जाती है, अगर इम्यूनिटी इतनी बढ़ जाती है, तो ये तो दिस इज समथिंग विच इज अमेजिंग. So that was the transition. Okay, Achha. the journey of tree plantation. So, my God. So it shifted from, rehabilitation. You went to the cancer program. Exactly. And from there was, like you said, there was an eye opener. So it unfolded again. So the unfolding happened again. Because I thought that जो मैं कैंसर के सामने लड़ रहा हूँ, मुझे लगता है कि कैंसर हो ही नहीं तो कैसा. सो मैं वहां से मैंने संकल्प लिया कि एक काम करता हूँ, अब व्हेन आई गो बैक टू द सिटी आई विल बी प्लांटिंग ट्रीज टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ माय लाइफ. अब जीवन का आखिरी सांस होगा तब तक पेड़ लगाऊंगा. और वो पेड़ लगाने का संकल्प जो है, क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया की स्थापना उस टाइम पे हुई थी और फिर पेड़ लगाना स्टार्ट कर दिया. Okay, so Clean India, Green India, मतलब it started which year? 2016. अभी 10 years हो गए. Yeah. So the greenification of India that you have started doing, so you had a very different thought behind it. लेकिन जब आपका unfold हुआ, now has your vision changed or is it the same thing कि भैया जड़ से तो निकाल के रहूँगा मैं? No, the vision has got empowered because again there is a thought process which transformed or maybe it fueled more because वापस एक unfolding हुआ. 2016 में मैंने प्लांटेशन स्टार्ट कर दिया. 1,50,000 2 लाख तक मैंने प्लांटेशन किया. एंड मैं जहाँ जाता था मैं एकदम डीप में जाता था. वी यूज टू एंगेज विथ यूथ, वी यूज टू गो इन द विलेजेस. वहाँ पे मैंने एक ही चीज़ देखी कि प्लांटेशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, बट देर आर पीपल जो कंसर्न लेवल है, लोगों को लग रहा है कि ठीक है ही इज डूइंग इट एंड अच्छा है, कर रहे हैं ऐसे करके. तो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा एक वैक्यूम लग रहा था. बट वापस मैंने अराउंड 2020 तक there was this a friend of mine who joined. He also became friends because he was a journalist. वो मेरा इंटरव्यू लेने आए थे और वो जर्नलिस्ट इंटरव्यू लेते लेते अच्छी तरह फ्रेंडशिप हो गई. तो उन्होंने बाद में बोला कि काम करो, थोड़ा लिखोगे तो आप you will be able to reach. So he inspired me to write. When I started writing, I started reading the facts and those facts were again a very deep concern. So जैसे मैंने बताया कि जिंदगी का आखिरी सांस तक पेड़ पौधे लगाने का मेरा जो संकल्प था, अभी मैंने वहाँ पे 2020 में सोचना चालू किया कि अगर मेरी जिंदगी लंबी है भगवान की कृपा से और मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे, तो भी मैं मेरी जिंदगी में अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ पेड़ लगा पाऊंगा. 1 करोड़ पेड़ में आज से इफ आई एम काउंटिंग, तो वहां से कम है. सो वो चल नहीं सकता है. सो वहां पे आप कह रहे हैं कि 1 crore trees you want to plant. No, I'm saying that if I'll be able to plant, but that is less from the day one because that is also less, you are saying. That is less. क्योंकि this is the fact which I want to highlight, and I'm very sad or very this thing of the per head tree count of India. Sorry, what? The per head. There is a per head tree count of India? Yeah, व्यक्ति दीठ पेड़ जो बोलते हैं वो इंडिया का only 28 है. 28 trees per head, which is the lowest in the world. अभी इस जो 28 trees है, आपको लगेगा कि okay 28 trees is a good number. Okay, I'll just give you I'll zap you with one another number. The highest per head tree count of the world in 2019 in Canada was 8,953 trees. 2020 was the year of COVID. They did tree plantation to such extreme level. You tell me this is per person? हाँ,
per 10,000, हाँ जी per person, जी and India is at this. या सो वो भी 2019 की मैं बात कर रहा हूँ. अब 700 यूएसए है, रशिया 4,000 है, चाइना विच वी थॉट कि चाइना इज द चाइना लाइक जो शंघाई बंद हो रहा था या पोल्यूशन के हिसाब से शंघाई लाइक चाइना इज 200 एंड इट इज ग्रोइंग लाइक क्रेजी बिकॉज दे हैव बीन ऑब्सेस्ड विथ द ग्रीनिफिकेशन. जापान की एक बात आपको ध्यान हो तो कि जापान में ऐसा हुआ था कि ये सब लिखते लिखते ही मुझे पता लगता गया कि जब उनके ऊपर बॉम्ब हुआ था तब जापान की जो टोक्यो है उसके आजू बाजू खाली 17,000 ट्रीज ही रह गए थे, ओनली 17,000, और वो भी पूरे गिर गए उसके बाद. सो वहाँ पे जो गवर्नमेंट थी वो साथ में बैठ के वो लोग सोच रहे थे कि क्या करें, व्हाट कैन वी डू, शुड वी गिव अ कंसिडरेबल अमाउंट ओनली टू द मेडिकल एड एंड द रीडेवलपमेंट ऑफ द पीपल, और ऑल्सो वी शुड टेक केयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी. बट दे वर वेरी इंटेलिजेंट. They thought that without biodiversity, we will not be engaged and we will not be giving them a good life. So they started tree plantation in that phase. When after the bombing, there were no trees which were there, and then Japan is right now 70% of the geographical area is the forest area, and they are crazy obsessed. So what happens is, I'll tell you one thing कि in 2019 जैसे मैंने बताया 28 ट्रीज है, उसके बाद अब साउथ गुजरात की बात करें तो क्वाड्रिलेटरल हाईवे आया, मेट्रो ट्रेन आ रही है, तो बुलेट ट्रेन आ रहा है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आ रहा है, तो इसमें भी बहुत सारे ट्रीज कट होने वाले हैं. तो कहीं ना कहीं So this was 2019 data. Abhi to because of the urbanization which is happening. So you're saying this number has gone down further. That is ridiculous. so that is where I thought that we need something much more bigger, and it has to be much more serious. And that seriousness उस टाइम पे वापस मैं जो लिखता था ये वो, तो उसमें मुझे एक एक चीज आई थी कि बिगेस्ट रिवॉल्यूशन जो हुआ है जिसमें मोस्ट पावरफुल थिंग, एंड वो कहीं ना कहीं इतना इन्फ्लुएंशियल था. तो वो क्या था? तो वो सत्याग्रह था जो सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी ने किया था. और वो सत्याग्रह जो था उससे आज़ादी भारत को जो मिली थी, और उसमें ज़्यादातर आज़ादी का जैसे प्रश्न हो रहा है, बट जन जन कैसे जुड़ा था, हाउ वेर एवरीवन कन्विंस्ड. सो वहाँ पे जन्म होता है कि एक सत्याग्रह क्लाइमेट चेंज और प्रदूषण के सामने, जैसे क्लाइमेट चेंज Satyagraha against pollution and climate climate change was born, and there it is resting on three laurels. There are three A's. First is कि जो मैंने अभी आपको बताया कि awareness. अभी आपके पास, if suppose you don't have the awareness, you will not be changing your attitude, and if you don't change your attitude, it will not eventually lead to action, because action अगर inspired होगा तो ही मतलब होगा. बिकॉज क्या होगा कि बहुत सारे जन प्लांटेशन करेंगे, बहुत सारी चीजें होगी, बट आप उसको किस हिसाब से देख रहे हैं, हाउ आर, व्हाट इज द लेंस दैट यू आर लुकिंग एट, एंड व्हाई इट इज the most important thing. Because when I shared the figure of 2019 28 trees, so the normal tree count for a person to be healthy is 432 trees. 432 every trees. individual. Okay, so Yeah. so let's take this count. Let's say that India today starts this greenification movement with you, with your support. What is going to be the end result if everybody starts doing their bit like how you're saying? इसका end result क्या होगा? Without everybody, it is not feasible only. It is not feasible. Why? Because we are on such a count. Only the government or only particular NGOs or corporates कुछ They भी can't. नहीं कर पाएंगे. ये जागरूकता का सवाल है. Because everybody has to realize why we need it. Because आज अगर एग्जाम्पल देता हूँ कि we interact, because satyagraha against pollution or climate change में we have been interacting with a lot of school children. We go to the schools, colleges. We also have celebrations by like Tree Ganesha, जिसमें we host them in the factory. Lot of students, thousands of students, we host them. Approximately around
3 लाख बच्चों के साथ अभी तक बात की है, यूथ 3 lakh. Yeah. That's a crazy number. या सो उनके साथ जब बात करते हैं तब एक चीज आती है, व्हेन आई एम टॉकिंग टू देम, you will be very very shocked that they have like anxiety and depression at that level. अगर मैं बहुत सारे बच्चों को बोलता हूँ कि आप में से कितने जन है जिसको ऐसे ही रोना आ रहा है, कि आपको अच्छा नहीं फील हो रहा है, देयर इज नो रीजन, there is no particular reason, you're not fought with your mother, father, nobody has, your friend have not, said anything to you, or you don't have any problems with anyone, but you just feel like crying. And then there are so many of them that they'll raise their hands and they'll say, yeah, this has happened to me and we don't know why. So what has happened is an average screen time of Indian citizen is the highest, because around 6.5 hours 7 hours जैसा approximate है. सो स्क्रीन टाइम डिजिटल इसमें जा रहे हैं. वी आर वरीड, वी आर स्कैर्ड. वो जो हम बोलते हैं ना कि वी आर स्कैर्ड ऑफ थिंग्स विच आर नॉट एक्चुअली not थ्रेट्स. actually present. हाँ, कि फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स जो पहले होता था वो हम अभी जनरेट कर रहे हैं. वी आर स्कैर्ड ऑफ वॉर गोइंग ऑन. ऑब्वियसली देयर इज अ कंसर्न कि ईरान एंड लाइक ये है, बट इंडिया का अभी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो हमको पता ही नहीं है, बिकॉज there was a sandstorm and there are various kind of storms and there are flooding which is like now very common incidents of flooding which is happening. There are people who are displaced, there are people who have in Kerala there are people who have lost their lives. Correct. So there has been a lot of things which have happened, and but we as people, because when we in the digital media, when we see there are so many things which are there hammered as this thing, so then the importance of this kind of things is not there only. So that thing which is very concerning, which is your future, which belongs to the future of the country, which again can scale down your economy, because अगर produce cultivation में problem हो जाएगा climate change के हिसाब से, तो economy down जा सकती है. वो direct engagement हो सकता है. प्रॉब्लम ये है कि जैसे वायनाड में, केरला में इतने सारे जन चले गए, लाइक एक वो पूरा बेल्ट पूरा चला गया, बट वेयर इज द एम्पैथी? ऐसा पहले होता था तो हम लोग इतना ज्यादा कंसर्न होते थे, हम लोग ये करते थे, बट वो एम्पैथी चली गई. तो इसका वजह ये है कि देयर इज द कंसर्न इज मिसिंग. द पीपल लाइक हैव स्टॉप्ड रिलेटिंग कि वो ये इसके वजह से हो सकता है. सो देयर वेयर दिस एंटायर थिंग इज के पहले तो अवेयरनेस दो. एंड व्हाट आर द अदर कंट्रीज डूइंग? लाइक यू गो टू ऑस्ट्रेलिया, यू गो टू कनाडा, यू गो टू जापान, you go, the biggest example is, nearest example is Singapore. You see a Changi airport, an airport which has the fantastic that rainforest, and you have a butterfly park and everything. So It's built inside the airport. inside the airport. So that is the kind of awareness that they are there, and this is the kind of dedication that they are working for. But in India there are two things which are very important, is कि the public is very intelligent. उनको पता है, इंडियंस पहले से यानी सनातन धर्म से अपने जानते हैं कि हम तो हमारे जो पेड़ों को हम पहले से रिस्पेक्ट करते हैं. हम पेड़ों के वो व्रत सावित्री का वो व्रत होता है कि हमारी जो ये है, हमारी रिवर्स है, तो माँ गंगा, माँ सरस्वती, माँ ये, पर जो थेम्स जो रिवर कहने वाले हैं या नाइल रिवर कहने वाले हैं, उन्होंने रिवर अच्छे रखे हैं. हमारे यहाँ पे वो इतना फीकल कंटेंट मिल गया, इतना ये हो गया कि वो, तो कहीं ना कहीं वो अवेयरनेस, जागरूकता जैसे आएगी, सिविक सेंस बढ़ेगी. सिविक सेंस बढ़ेगा, लोगों को पता लगेगा, लोग जुड़ेंगे. और मेरे जो अभी तक के एक्सपीरियंस से मुझे लगता है कि जहाँ जब भी बात हुई है, तो यूथ has always correlated, and they have said कि we want to be a part of this. You said that लोगों को पहले awareness देना पड़ता है. So basically awareness is like preparing them, right? We are preparing the citizens. The numbers you have just informed me, it is absolutely shocking. I was so oblivious for the fact कि there is a number. जहाँ तक आपने इतनी डिटेलिंग की हुई है, नो वंडर आपको ग्रीन मैन इसलिए बुलाया जाता है, बिकॉज यू गॉन टू द डेप्थ ऑफ इट. मेरे को एक बात बताइए, विल इंडिया, इट्स अ वेरी सैड स्टेट टू इवन आस्क दिस पर्टिकुलर थिंग, क्या भारत, क्या इंडिया
सिविक सेंस को लेकर कभी सुधरेगा, ताकि हमारा जो प्रकृति है उस पे इतना प्रॉब्लम ना आए। एंड बिकॉज मैं ये हर बार यही बोलता रहता हूँ कि हम लोग क्या करते हैं एज सिटीजन्स, हम लोग सब गवर्नमेंट और एनजीओज और जो जो कुर्सी पे बैठे हैं उन पे डाल देते हैं कि ये उनकी जिम्मेदारी, हमारी नहीं है। पार्क बनाना है आप बनाओ, हाँ उसको मेंटेन करना है आप करो, हम नहीं करेंगे। हाँ। भले ही कितना भी कचरा डाल दें वहां पर। व्हाई दिस हैपनिंग एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर इट? ऐसा क्यों है? See, I think this is where I have written a book about Architect of Amrit Path. Architect of Amrit Path was a book which mentions the initiatives of the government of India for environment specifically. And 2014 के बाद क्या क्या चीज़ें हुई है, हम अगर बोलते हैं कि हम सुवर्ण काल में जाएंगे, लाइक जो हमारा गोल्डन एरा में जाएंगे, सो वहाँ पे क्या होगा, हमारे पास हमारा सेंसेक्स जो है वो 1 लाख पे चला जाएगा, एवरीबडी विल हैव अ लॉट ऑफ दिस थिंग, बट इफ यू डोंट हैव एनवायरनमेंट इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ अ गुड थिंग, बिकॉज वो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट रहेगी। दूसरा ये है कि सरकार क्या कर रही है, बिकॉज बहुत सारे जन ऐसा ये कह रहे हैं कि भाई लाइक non-politically, suppose if this question is happening, there are various kind of malign campaigns which are going on in the world saying that India is very this, India is not, but the government is doing, because when I say a big cat alliance is happening, so big cat alliance is also like the 5 cats which are there, जो tiger, leopard, cheetah और like जो कैट्स है उसकी कंट्रीज अलाइन कर रही है, अलाइन करके उसमें इकोलॉजी, इकोनॉमी और बायोडाइवर्सिटी का एक्सचेंज हो रहा है। तो दिस इज द फर्स्ट काइंड ऑफ अ नैटो काइंड ऑफ दिस थिंग इन विच दे आर जॉइनिंग हैंड्स with the environment in the vision. There is India's cooling action plan, there is electrification of Indian railways. So inter-segment changes which is happening. Yeah, electrification of Indian railways is also happening. So the government is trying. I would say ऐसा नहीं है कि the government is not doing, but for this reason I believe कि politics side पे होना चाहिए, सब कुछ side पे होके we have to be on one agenda, everybody has to because वहाँ पे कोई discrimination नहीं चल सकता है। Let's all be a part, like कि पर्यावरण को बचाना या सत्याग्रह करना, everyone which includes a person who is helping with the sweeping to the person who is a big billionaire, everyone has to be a part of it. So उनको पर्यावरण सेनानी बनना पड़ेगा और उनको जुड़ना पड़ेगा, उनको कहीं ना कहीं उसके अंदर ये कॉज को बड़ा करना पड़ेगा, और इसका स्कोप होगा ऐसा नहीं, बिकॉज हम होपफुल है कि लाइक वी आर ऑल होपफुल बिकॉज द काइंड ऑफ इंडिया विच वी विजुअलाइज एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर इंडिया, and as a citizen who is very proud, I believe that Indians have this thing, the inclination will be there. एक बार उनको खाली नॉलेज आए, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई भी सेगमेंट में बहुत सारे बदलाव आए हैं, चेंजेस आए हैं, और ये एक छोटी सी चीज़ है, पर ये अगर प्रॉपर वे में अवेयरनेस जाएगी तो आई थिंक एक फिनोमिनल चेंज आएगा। What is the way of when you say proper awareness? Have you created like this? Like, is it can the same thing what you have done, can it be replicated somewhere else? Yeah, so here my entire this thing is कि सत्याग्रह against pollution and climate change doesn't need Viral Desai to speak all the time. Okay. It will have such monumental work like Plug and play model kind. Yeah, so we had a public place which was transformed. That is a single railway station was there from like in Surat by the name of Udna. So Udna we transformed it into a green railway station. By the green term, I don't mean to be the IGBC green is not the definition, because the IGBC green definition जो है वो परफेक्ट है, बट वो क्वालिटी के लिए है कि जो जर्मनी के वो देशों के लिए, जहाँ पे पूरे लेवल पे वो सस्टेनेबिलिटी के वो बेसिक
वो मीट करके पैरामीटर्स मीट करके वो प्लांटेशन है, ट्रीज है, वो सब है। हमारे यहाँ पे ये जागरूकता लाना, और जैसे आपने पहले जो आपका प्रश्न था कि सिविक सेंस को कैसे हम चेंज करें, हम कैसे चैलेंज करें। सो उधना एक ऐसा स्टेशन था जो सूरत में है कि जो जहाँ पे यूपी, बिहार, उड़ीसा, झारखंड की ट्रेन जाती है। यूपी, बिहार, उड़ीसा, झारखंड वापस वही है कि जो टेक्सटाइल के जो हमारे यहाँ पे वर्कर्स आते हैं या डायमंड के वर्कर्स आते हैं, वो लोग ट्रैवल होते हैं। और ये च्यूइंग टोबैको ज्यादा से ज्यादा है वहां पे। इट इज लाइक अ विशियस सर्कल। इट्स लाइक अ विशियस सर्कल। तो वहां पे मैं चेंज कैसे ला सकता हूँ? तो हमने उधना जो है उसको पूरा कन्वर्जन ऐसा किया था कि उसको इतना ब्यूटिफिकेशन, if you relate to Udna at that point of time, it was like Kurunda railway station. Kurunda is a place in Australia and it was a mine. वो एक्सकेवेशन माइन था, कोल उसमें से निकलता था। उसको उन्होंने ट्रांसफॉर्म करके उसको पूरा एक रेन फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर दिया। उसका एक स्टेशन है, वो पूरा रेन फॉरेस्ट जाने के लिए स्टेशन। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द ग्रीन स्टेशन। तो वो उधना को वो लोग रिलेट कर रहे थे कि दिस इज एज ब्यूटीफुल एज द कोरुंडा स्टेशन। सो वहाँ पे एक जिंदा पुलवामा शहीद स्मारक था, जिसमें पुलवामा के जितने भी शहीद हैं उनके नाम के साथ पेड़ लगाए थे कि आने वाले समय में रोग प्रतिकारक शक्ति और ऑक्सीजन वो दे रहे हैं, ऐसा करके। What a thought, what a lovely thought. So who's maintaining that now? राइट नाउ वहाँ पे 2019-2021 में वापस उसका ये रीडेवलपमेंट हुआ, एंड वो रीडेवलपमेंट में वो आगे का एरिया पूरा। So this is what, so like I said कि urbanization kills a lot of things. तो मतलब I guess urbanization is required. did it hurt you when this happened? Because you are so close to nature. So emotionally it is going to hurt me, because I would be lying if I would say that I didn't, because I am very very connected to my saplings, my trees, my this thing। मैं उनको बेबीज जैसा ये करता हूँ। तो मैंने प्लांट किया है, मैं उसको नर्चर कर रहा हूँ, मैं उसको देखने जा रहा हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होती है। और ये मॉडल तो ऐसा था कि मैं जैसे MS यूनिवर्सिटी के बच्चे जोग्राफिकल डिपार्टमेंट के देखने के लिए आए, बॉम्बे से बहुत सारे जन आए थे। तो देयर वर लॉट्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस वी वर होस्टिंग एट द उधना रेलवे स्टेशन। पीछे साइमल्टेनियसली देयर वाज अ स्पैरो जोन कि जिसमें स्पैरोज बहुत सारी हो गई थी। 2000 स्पैरोज तो दिखते नहीं है, they're all like extinct। तो बट कहीं ना कहीं मैं इतना ही वापस ये कहना चाहूंगा, बिकॉज आई एम एन एंटरप्रेन्योर, आई अंडरस्टैंड कि देयर आर like development also has its requirements, and there was a need for Udna to be redeveloped, because सूरत का जो स्टेशन पूरा रीमॉडल होगा उसका बहुत मेजर चेंजेस आएंगे, तो चंक वहां पर आता है। उनकी ट्रेन्स पूरी उधर आने वाली थी। And imagine when you get down off a station which is full of green forest. Oh, it was you would feel wow यार ये तो मतलब so उधना के बाद हमने उदवाड़ा भी किया था। उधना में पीछे शहीद स्मृति वन करके फॉरेस्ट है, जो मियावाकी फर्स्ट मियावाकी फॉरेस्ट ऑफ साउथ गुजरात है, फर्स्ट मियावाकी फॉरेस्ट ऑफ इंडियन रेलवेज है, वो अभी भी जिंदा है, वो एकदम अच्छी तरह है। रिसेंटली SVNIT जो हमारी एक लीडिंग यूनिवर्सिटी है, उन्होंने पूरा रिसर्च किया है उधर। AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 18 to 25 जैसा PM 2.5 और PM 10 में डिफरेंस आ रहा है आजू बाजू के एरिया। और जैसे ही आप थोड़ा सा इस तरफ आएंगे तो पॉल्यूशन लेवल बढ़ जाता है। तो ये दिस इज अ मॉडल कि जिसमें व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ डेंस प्लांटेशन और मियावाकी फॉरेस्ट। We've spoken about a lot of things. ग्रीन उड़ना के बारे में आपने बोला, मेरे को ग्रीनिफिकेशन के बारे में बोला। हाउ आर यू मैनेजिंग दिस, एज इन लाइक गवर्नमेंट से कितना सपोर्ट है आपको? गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं लिया है हमने, गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं लिया हमने। नहीं, गवर्नमेंट को लाइक वी आर डूइंग MOUs with the government कि we will maintain like we will be transforming this and we will be taking care of this till this thing. So अभी recently we are doing a police station, जो फर्स्ट एशिया का ऐसा पुलिस स्टेशन होगा जो ग्रीन पुलिस स्टेशन होगा। I mean this is so new, so you transforming a green police station. Yeah, police station has a pocket forest inside. A pocket forest inside. Yeah.
It will have 50 just paintings and everything, so there will be people who will be going there. So coming back to the question that how satyagraha will be going further is when public places, they silently speak as green warriors. So what happens is it is doing three things: a green police station or a green railway station. What is it doing is it is spreading awareness, because वहाँ पे 50 से ज़्यादा पेंटिंग, वो it is talking to anybody who is entering in. Then it is changing the attitude of the people, because they see the butterflies, they see the greenery, and they feel कि वाओ, अब मैं ये घर लेके जाना चाहता हूँ, तो वो कहीं ना कहीं मोटिवेट होके घर वो transform ग्रीनरी, होगा। हाँ। और एक्शन में वो आ रहा है, क्योंकि अगर किसी ने कापोद्रा देख लिया, कि किसी ने ग्रीन उदना देख लिया है, कि ग्रीन उदवाड़ा देखा है, तो वो फिर कहीं ना कहीं रेप्लिकेशन हो सकता है कि पूरे इंडिया में ऐसे स्टेशन आ सकते हैं, क्योंकि जगह कम है हमारे पास। तो वो एक डेंस एरिया में एक फॉरेस्ट आया, तो इट विल बी फॉर लैक्स ऑफ द पीपल हु आर इन द विसिनिटी, उसके लिए बहुत बड़ा ये बून हो जाएगा, वरदान हो जाएगा। आपने इतना बड़ा जो ये मुहिम चलाया है, द मूवमेंट, यू आर डूइंग इट बाय योरसेल्फ, व्हाट आर यू गेटिंग आउट ऑफ इट? What am I getting? हाँ, I'm not getting anything extra, but I am the happiest person, because when I see ये आप when सिर्फ हैप्पीनेस के लिए कर रहे हैं, खुद की खुशी के लिए? इतनी बड़ी है क्या ये? मतलब इतना बड़ा है कि आप जब ये कर रहे हैं, बिकॉज जब मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, आई एम श्योर द व्यूअर्स आर आल्सो नोटिसिंग दिस, व्हेन यू आर स्पीकिंग अबाउट द वर्क दैट यू हैव डन, it is getting a very big smile on your face. So I don't know, like, मैं इसका क्या जवाब दूं, because I'm still figuring out, but there are small incidences कि जो मुझे बहुत डीप सेटिस्फेक्शन देते हैं। जैसे एक इंसिडेंट है, एक दिन हम लोग गए उधना रेलवे स्टेशन पे, और वहाँ पे हमने जो पुलवामा का जो ग्रीन शहीद स्मारक बनाया था, एक साइड पे पेड़ था, एक साइड पे आर्मी जवान की बंदूक है, वहाँ पे किसी ने फूल रखे थे। हम लोग सोच रहे कि ये फूल कैसे किसने रखे, क्या कर रहे हैं, लाइक कौन है। हमने साइड पे जाके भी वेटिंग, there are two people coming and, like, praying, and so then we start talking to them. Then they tell, okay, this is something which somebody has made, but it is so wonderful, and मुझे बहुत याद आ रहा था, मेरा भाई इसमें ये है, हाँ, शहीद हुआ, और मैं उसको मिलने आया हूँ, और वो पेड़ के हाँ, पेड़ के साथ में मिल रहा हूँ, या और ये बहुत ब्यूटीफुल वे है ऑफ एक्सप्रेसिंग, एंड आई हैव टीयर्स इन माय आईज। आई डोंट टेल हिम दैट दिस इज बीइंग डन, बट देयर वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन हु वाज देयर, एंड ही मेंशन्ड, एंड देन अगेन उनका ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स, मैं वो ऐसे बोलते हैं, सहन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा होता है। कि जैसे दूसरा एक इंसिडेंस है कि जब ये कट रहा था, तो मैं उधर जा ही नहीं रहा था, ये वो सारा मैं देखने के लिए जाता था, ये तो उस टाइम पे भी जो रिक्शा है, ऑटो रिक्शा वाले हैं, तो वो कभी भी साइड नहीं देते हैं। वो ऑटो रिक्शा वाले एकदम, यू विल बी सरप्राइज कि वहां पे ऑटो रिक्शा वालों ने पूरा पानी देना, केयर करना, और विरल भाई की ग्रीन गाड़ी आ रही है, तो ग्रीन गाड़ी के हिसाब से जगह करो, ये तो वो ग्रीन बनाने वाले हैं, ऐसे करके आ रहे हैं। That's the awareness. मतलब people have started noticing things. You know, I've always felt this. एक बहुत ही फिल्म का बहुत ही डायलॉग भी है, that powerful people come from powerful places. But then I've also learned that powerful people make places powerful. But उससे भी होता है, great people understand the place, rehabilitate it, refurbish it, and make it for the people forever. And you are one of them, Viren bhai. I have, मतलब I am so shocked. I have spoken to a lot of people. This kind of depth, I don't think anybody has ever spoken about it. Because the awareness, what you are saying, speaking to you, I am getting aware about so many things which we can do as an individual, लेकिन हम वो कर नहीं पाते हैं। आपने उसको करके लोगों को दिखा भी दिया, because you are not making sound, you are doing it so quietly, so powerfully, that the entire India and the entire world is forced to notice the change. When we were talking, I was so shocked about certain numbers which
मेरे को पता भी नहीं था ऐसा कुछ होता है। जो आपने इतना कुछ किया है जस्ट फॉर द स्माइल ऑफ अ पर्सन, जस्ट फॉर द स्माइल ऑफ द पर्सन, एंड दैट पर्सन गिविंग यू recognition. Of course, let me tell the audience, Viral Bhai has got awards, accolades, recognitions, everything. That is never going to stop, but he is not doing it for that. Like I said, people started noticing what he has done, and that is what he's made of. Now, इतना सब करने के बाद अंदर संतुष्टि कैसी रहती है? कैसे संतुष्टि मतलब नहीं रहती है। नहीं रहती है? क्यों? I'm like I want to do more. You want to do You know, more. I have created around 7 forests. There's a very big forest coming in the vicinity at the area of Sachin GIDC, and that is 5,000 trees. So the idea is just that okay, how we can replicate and how we can create, because you can't rest when you know the figures, when you know that you know कितना भी करेंगे वो कम होगा, तो उसको मॉडल रीमॉडल करके कैसे आगे बढ़ते जाए, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, करते रहो उसको। अगर इंट्रैक्शन कैसे कर पाए, बिकॉज पब्लिक इंट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कम्युनिटी ड्रिवन जो है, जैसे हम जापान की बात कर रहे हैं, तो जापान में नारुतो करके उनको बचपन से वो कार्टून ऐसा दिखाते हैं कि जिसमें कार्टून में दे मेक देम अंडरस्टैंड द किड्स के एनवायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, water is very important, trees are very important. So this kind of a provision, like how do we do, and in public places how we can transform, because as you mentioned, it is very clear that the civic sense is a question, like how we can motivate people, how we can inspire people. So somewhere after a point of time I keep on thinking, okay, let's do this, how can we change this. If you see in my factory, also I have planted more than 5,000 trees, shrub plants. So in my factory overall you will see a lot of butterflies flying, you will see parrots, you will see even there was a peahen who visited this thing. So मैं ऐसा सोचता हूँ कि एक ही सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन आप मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ ले लीजिए, आने वाले भविष्य का जो हमको चिंता है, हमारे इकोनॉमी को आपको सेफगार्ड करना है, आने वाले जनरेशंस के लिए केयर करना है, तो दैट इज ओनली एनवायरमेंट, एंड दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टिल एंड सूडो एक्टिविज्म से लेके ये सारी चीजें जो है उससे हाउ टू स्टे अवे एंड हाउ टू डिफाइन समथिंग इन अ वे, how to transform as an entrepreneur, how to scale bigger projects, what to do, and how can we arrange an interaction of the people. So those are the things that go. I must tell you that not every entrepreneur is as humble as you are. Not every entrepreneur that we meet talks such highly and richly about environment. It is either about money, either about fancy cars that you drive, things like that. My fanciest car is the green car. I don't have it, but वो green car में आप That's so जाएंगे, sweet. But then there is a Bentley which stopped, and they asked me, what is the purpose of this green car? Can I take a picture with that in Bombay when I took the green car? So that is what I'm saying. The fancy cars are there, but the green car has a purpose to serve. That is what. But इसमें आपने बहुत time भी दिया है, right? You have given almost like decades. You're working constantly. Now you have a family, you are a father too. Okay. ऐसा कभी हुआ है कि family ने बोला कि यार why we have to do this? You have certain things which you have committed already, but the family is like नहीं अभी नहीं, इसको ये करो वो करो. Others, I'm sure they're very supportive, but होता है ना कि it's very difficult to. Yeah. It is very it is very possible, because family के unwavered support के बिना ये possible नहीं है. And you are seeing me as a face, I am talking, you will be seeing all the awards, achievements and everything, but I would say that behind this entire persona of Viral Desai is the entire family which is making or creating, and there are lots and lots of sacrifices, there are lots and lots of emotions, lots and lots of as you say that you go back home when something like this is happening, that
the forest which I'm talking about, Shahid Smriti one, was engulfed in fire, extreme fire, because there were some notorious youth, like, who did that. And I was so unhappy. I'm crying, and that's the family. Like, they will say, "Don't worry, it will be fine." And that is where, like, they bring you back. So I would say it is otherwise. They are the ones who are there backing. They are the ones who have made me what I am, and every inch, every this thing that support, without them, it is just not feasible. So So you're saying that family is everything to you, absolutely. and and without their support, Viral Desai ji would not be Viral Desai ji. Absolutely not. Acha, so now we've talked about so many things in depth. You've told me about things which has just shocked me beyond my words. You've spoken about awareness. The way you have spoken about awareness, I'm actually noticing a change within me because I've started thinking that way. What do you think? What is India's future? भारत का क्या फ्यूचर लगता मैं है? बहुत छोटा हूँ भारत का फ्यूचर ये करने के लिए, बहुत सारे जन हैं, बट मैं इतना ही चाहूँगा, विद गॉड्स ग्रेस एंड ब्लेसिंग्स, दैट इंडिया लाइक is a rich country with the spirituality, the dynamism. There are people who are from all the vicinity, like all the religions are there. We have our festivals which are very colorful, very very bright and very nice. So I believe that India has the capacity that once it realizes we can get it, like that वो ज्ञात जब आ जाएगा तो पूरा ये हो जाएगा, बिकॉज एक ही चीज़ है कि हमारे जो फेस्टिवल्स हैं, हमारे जो फेस्टिव ये है, हम कैसे सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो रिलीजन फेस्टिवल्स उसमें भी हम पर्यावरण को इन्वॉल्व कर सकते हैं। एक दिवाली पे भी या गणेशा पे भी हम ट्री गणेशा करके ये कर सकते हैं। ईद में हम पेड़ एक दूसरे को दे के ये कर सकते हैं, कलमा पढ़ के पेड़ लगा सकते हैं, लाइक ये है ही, था ही, एंड इंडिया हैज टू जस्ट लिटिल गो बैक। एंड मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा, आई एम सॉरी टू कट यू शॉर्ट, बट देन ये इतने हम्बल और मॉडेस्ट पर्सन है, इन्होंने सब चीजें बता दी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं क्योंकि बताना जरूरी है। ये कहानी हर उस हिंदुस्तानी के लिए जरूरी है और ये सुनना बहुत आवश्यक है आप लोगों के लिए। इन्होंने किया क्या है, कैसे किया है, आप लोग सब सुनिए। आपको पता है कि विरल भाई को हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति, हर कोई इनका नाम जानता है, उनसे इनको अवार्ड्स भी बहुत सारे मिले हैं, लेकिन आपने ये नोटिस किया होगा कि एक बार भी इन्होंने उस चीज़ का नाम नहीं लिया है। पता है क्यों? क्योंकि जो काम इन्होंने किया है ना, वो हर कोई नहीं कर सकता। इन्होंने क्या किया है, उद्योग और करुणा को मिक्स किया, और जब आप ये दोनों को मिक्स करते हैं तो वीरल जी जैसे लोग हमारे भारत देश में पैदा होते हैं। इट इज़ एन एब्सोल्यूट ऑनर to have you had on this particular show, and I am beyond I would say I'll be gloated up, like because the kind of this thing, I'm really humble. Nahin. The way you presenting, the way you're saying so very much. very happy, sir, that you are a part I'm of really this. truly humble. I would say I'm honored because I came across a person who has done so much, who has spoken about businessmen, who has spoken about business entrepreneurship, and how a leader is changing into a responsible entrepreneurship and getting into the environment factor, saving the environment. आपने बोला कि सब छोड़ दो, सब मिल जाएगा आपको, आप environment का warrior बन के safeguard करिए, you will get everything like how you are getting. So there is a tagline which we have at Zenitex: a business that makes nothing but money is poor business. That's the tagline. Every businessman should know this. Every person, every human being in India should know this. Whatever he said, any business
which makes nothing but money is poor business. This is a sign of a great businessman, a great mind. What a humble person. I'm so thrilled to have you had over this. Now, this is just one last segment. There are a lot of people who are looking at you right now. I would directly, I want you to speak to them, look into the camera, and tell your heart out. I want them to know Viral Bhai in and out, and how can they get, you know, get inspired by you. I mean, I am so inspired just by listening to you. What is the message that you would want to give it to them? The message, because that's again, they know it, they know everything, but okay, I'll try. Please go ahead. Go ahead. सो आप सभी ने ये सारी जो बातें हैं वो सुनी है, एंड कहीं ना कहीं जो पर्यावरण की बातें हैं जो हमने इधर की है वो बहुत सीरियस है, और वो बहुत ज़्यादा मैटर करने वाली है आने वाले आपके भविष्य में। हम जो भी लाइक भारत का भविष्य गिनेंगे, हम आने वाली सिविलाइजेशंस जो भारत में जो जन्म होगा, जो आने वाली हमारी जितनी भी पीढ़ी है उनके लिए अगर ये करेंगे तो सबसे बड़ा चैलेंज जो आएगा वो पर्यावरण का आएगा, और वो इकोनॉमी में आएगा, वो लाइक मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, क्लाइमेट चेंज के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही है, और आपके आसपास ये सारी चीज़ पहुंच भी गई है। तो मैं कहीं ना कहीं आप सभी से एकदम हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैसेज यही है कि आओ सब मिल के एक सत्याग्रह करते हैं, जो सत्याग्रह में जन जन जुड़ता है, और जन जन जुड़ के हम हमारे पर्यावरण, हमारे आजू बाजू के पर्यावरण में हमको ऐसा कोई भी एक्टिविज्म नहीं करना है, हमको ऐसी कोई भी चीज़ बड़े बड़े लेवल पे नहीं करनी है कि जहाँ पे हम किसी को बोले कि ये नहीं करना है। हम क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअली क्या कर सकते हैं। किचन गार्डन हम अगर बना सकते हैं, एक छोटा सा एक गमला भी अगर ये रख रहे हैं तो भी बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके आसपास पर्यावरण रहेगा तो आप ब्लेस्ड रहेंगे, आप कहीं ना कहीं। और ये बहुत सिंपल है, जो अगेन मैं एकदम पॉजिटिवली अगर बोलना चाहूँगा, हम बहुत बड़े हैं, वी आर अ पॉपुलेशन लाइक बिगेस्ट पॉपुलेशन। सो अगर हम चाहेंगे तो हम ये अटेंड कर सकते हैं कि हम अगर 2 पौधे भी लगाए और हर एक जन लगा दे तो लाइक इंडिया कैन बी अ डिफरेंट place altogether. So even if 30-40% also of the people if we do it, I think India will change, and we will get to the 2047 with the best of the green this thing. Thank you for listening, and God bless you. Thank you. Thank you, Viral Bhai.